Hi, welcome to SD Management Institute and Commerce classes, SDMIC classes. This is in continuation of my previous video, Learn Accounting Part 1. And in that I already told you that means I will be making in this learning of accounts in 5 parts, so that the learners can easily understand and learn the accounts. And it's not a very difficult thing. At the same time, when we get into the more details of accounts, it is very vast. It's not a small thing. Accounts is a very vast subject. At the same time, learning accounts is very easy also. It's because the basic structure and the rules and principles are same. That is not going to change. So in our last video, we briefly explained about accounts, how accounting works and what is accounting, how accounts looks and work, the two parts of accounts, debit side and credit side, and how to enter. These things I explained in detail. So it is not difficult to understand and to do the accounting. To learn very deeply, and there need more studies and more experience. Okay, now those who want to get a job or any small part-time job or any other job, accounting related job, they can learn this video, go through the video, and then they can learn and just whatever the initial stage, whatever they require, they can do up. I will be teaching up to finalization. In this Learn Accounting Part 2 video, I will brief out accounts as profession, its rules, aspects, registers, ledger, this means accounting cycle, and types of accounting. Conclude with the career opportunities. I explained last time also what is the benefit of learning accounting. Accounts has a very good scope. Now every time means every end of this I will be explaining, because people get motivated in finance and accounts field, and many people are very interested in this thing. And not only this, to learn while learning commerce, the importance of commerce, and whoever want to become an entrepreneur also, they want to learn at least they must learn at least some accounting works. So for them also, businessmen also, it is very important to learn these accounts. Businessmen, while if they learn that accounts, it will help them in their business. So for that purpose I am making this. Learning accounts is easy. Accounting as a profession. Accounting job is a respected profession. A major component of the accounting profession is the Big Four, and support 4 parts actually. The professional job becomes segregated into 4 parts. And there are various things, but still the main thing is 4 divisions. Like these 4 larger accounting firms conduct one audit firms, consulting firms, tax advisories, and tax related works, and other services like many other projects works and financial works and all these things. So that comes under that project working and many of the things. Okay, accounting works, so people provide many of the things people provide. Now careers in accounting may vastly different by industry to industry. There are so many in every industry accounting is accounting. Every business accounting is necessary. So department wise, and the functions are of various types, various purposes it is made. Mainly 2 purpose actually. The results of the account, that is profit and loss account and the balance sheet financial position. And the second thing, the accounts, for example anybody's accounts, or for example any asset account or liability account or any other type of individual's account, creditors account, debtors account. If they want to just get the details immediately, they can get it. So, and the accounts are maintained for various purposes, for tax authorities and many other purposes it is made. Now I'll just brief out means this is for Big Fours in bit more details. So those who want to learn accounts, it is just a general knowledge. They want to know why these accounts is made, for what purposes, and who are the benefits and what are the segments, all this thing. Okay, so that they will get a basic idea and basic knowledge of the accounts and why it is made. So it will help them. Okay, otherwise doing accounting and working accounting, it is not necessary to just to get into all these details. It is
just a brief means how to just record a document and into the register and posting and all this thing. It is not very difficult. It is very easy. At the same time, means they must have some knowledge. That is the reason I am giving you this. Now, auditor means audit firms. There are two types of auditors: internal audit and external audit. The internal audit is, that means that the audit conducting inside the firm during the entire year, and the internal parties are appointed. It can be a chartered accountant or means any other senior experienced, highly experienced accountants or experts can do this internal auditing work. Means just the organization is very big, very large organization, and the statutory audit cannot be completed 100%. So in order to make sure that the functioning means that documents and the recording and all the procedures what are undergoing is in accordance with the accounting generally accepted accounting principle, the rules and regulations, the principles, everything is taken care of, and any means malfunctioning or any other types of frauds or anything, whatever it is happening, it can be checked. It means if it is a large organization, it is very difficult to understand. So an internal audit will make sure that everything is working in proper way. Now, external audit is it should be conducted by a chartered accountant firm, because external audit is a statutory audit required for the purpose of the tax authorities and other legal compliances. It is required a chartered accountant, means a certified chartered accountant, certified practicing chartered accountant should conduct an audit. It's an annual audit or any annual audit. It's an annual audit. Now, forensic account. This account is an investigative account. Means, for example, transactions are just conducting, and means some of the transaction taken and just cross-checked, and external activity and investigate the transaction of individual business or individual or business. जो business में जो हो रहा है उसका जो internal जो investigations जो होता है वो purpose के लिए बनाता है. Means ये क्या हो रहा है, जो बराबर है क्या, इसको cross check करता है, या कुछ sample surveys like statistical survey, all this conduct करते हैं, market surveys, all this purpose के लिए, और many other things, any frauds हो रहे हैं क्या, उसका cross checking होता है. That is an investigative account. This is a forensic account. Cost accountant maintains and prepare cost records to know how much a product should cost, so that underpricing or overpricing shall be avoided. This we already explained in last video also. Cost account is very important to find out the price, means fix a price of a product. Means what is the actual cost of the product and how much a price selling price should keep. So this is very important. Along with that, inventory accounting and everything is coming. So now tax accountant. Tax accountant strategically plans the optimal business composition to minimize tax liabilities as well as ensures compliance with the tax reporting. ये टैक्स अकाउंटेंट का काम जो वो भी लास्ट टाइम ने हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था, जो दैट वाज एक्सप्लेन इन 3 parts, एंड दिस इज the job profession I am just giving. And those tax accountants जो क्या करता है, वो जो strategic जो planning करता है, मीन्स टैक्स जो लाइबिलिटीज़ को मिनिमाइज़ करने के लिए. जैसे हम लास्ट टाइम बताया था, जीएसटी जितना कलेक्ट किया है, जितना अभी उसके बाद में हम लोग ने जीएसटी हम लोग परचेज साइड में कितना पेमेंट किया है, उसका नॉकआउट करके जो बैलेंस करने का, और सेम वे रिड्यूसर टाइम पे रिटर्न फाइल करने का, उसका फाइनेंस को अरेंजमेंट करके जो टैक्स जो देना है, जो पेमेंट करना है बाकी, उसको टाइम पे पेमेंट करवाने का, टाइम पर रिटर्न फाइल करने का, ऑल दिस थिंग. सो देयर वोंट बी एनी पेनल्टी, इंटरेस्ट और एनीथिंग, और दिस विल दैट विल नॉट कम. सो टैक्स अकाउंटेंट का काम वही है, और रिकॉर्ड्स रखने का, उसको प्रॉपर मेंटेन करने का, उसका टाइम पे रिपोर्टिंग करने का, ये सब चीज़ उसका इसके लिए रिलेटेड रिकॉर्ड्स बनाने का और रखने का. नाउ मैनेजर अकाउंटिंग, दिस ऑल्सो वी एक्सप्लेन लास्ट टाइम. मीन्स जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में से जो करता रहता है, तो उसमें से ये सब डिटेल्स बनाते रहते हैं. तो मैनेजर अकाउंटेंट्स क्या करते हैं, जो मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग और स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के लिए जो, और उसका रिकमेंडेशन और उसका डिसीजन और डिस्कशन और ये सब के लिए जो सेट ऑफ जो रिकॉर्ड्स बनाते हैं वो मैनेजरियल अकाउंटेंट्स करते हैं.
ना फाइनेंशियल अकाउंटेंट्स एक मेन जो रहता है, और उसके बाद में ये जो होता है ऑडिटर, फॉरेंसिक अकाउंटेंट, then cost accountant, tax accountant, financial accountant, managerial accountant, information and technology analyst accountant. This new means after that introduction of this computer in all the fields, many this is an additional means job opportunity. So in earlier years there was no computers and it was all manual register. So this particular portion was not this segment was not there. So now after the introduction of information technology, and it is compulsory to maintain this the system, means when accounts or ERP software, very large organization, they are using ERP softwares, this cost accounting, inventory, and all this things related. This so many things comes together, and payrolls, everything is included in the ERP software. So to maintain that, their software, their data security and storage, like that, means that should be handled by information technology analyst or accountant. For that purpose, they will be trained in that purpose. The controller oversees the accounting functions of functional reporting, accounts payable, accounts receivable, and procurement. And some of the segments of this accounting are, so this accounts related means जो procurement रहेगा या कुछ भी इनके लिए जो क्या ज़रूरत पड़ता है सब चीज़ का, और then financial reporting का होता है, और accounts payable, accounts receivable, like means that large organization, there is a the section of accountants, they maintain they will focus on accounts payable, means कभी time पे payment should be time on made on time, ये सब चीज़ है. और receivable अगर वो that is more focus करते हैं, means अगर receivable अगर delay किया, कुछ लापरवाही किया, then what happens, जो उनका जो कैश फ्लो में इफेक्ट पड़ता है, कैश फ्लो में इफेक्ट पड़ेगा तो बाकी सब में इफेक्ट पड़ता है. फॉर एग्जांपल अगर समझो कैश फ्लो टाइम पे नहीं हुआ, कैश अगर बराबर टाइम पेमेंट अगर रिसीव बराबर टाइम पे नहीं किया, तो समझो टैक्स पेमेंट लेट हो गया, या सैलरी पेमेंट लेट हो गया, या कुछ टैक्स स्टैट्यूटरी ड्यूस लेट हो गया पेमेंट करना, तो उसमें पेनल्टी, इंटरेस्ट और उसका गुडविल में भी सब में इफेक्ट हो जाता है, बार बार डिफ़ॉल्ट होते तो. सो रिसीवेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो टाइम पे आना चाहिए, तो ये वो कैश फ्लो बराबर चलते रहेगा. Many other career opportunities are there in learning of accounts. इसके अलावा बहुत सारा ये है सेक्शंस है अकाउंट्स में. The scope and growth path of learning accountancy is from the lower level of bookkeeping staff, accounting clerk, junior accountant, senior accountant, department head, inventory accountant, chief accountant, assistant manager, senior manager, AGM, assistant general manager, vice president, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, CEO, सब बहुत बड़ा कैटेगरी में. लास्ट टाइम में भी मैंने ये वीडियो में भी मैंने बताया था स्कोप कहाँ से लेके. वो जस्ट बेसिक अकाउंटिंग क्लर्क मीन्स बुककीपिंग स्टाफ से लेके अकाउंटिंग क्लर्क, जूनियर अकाउंटेंट, ऐसा जो एक्सपीरियंस बढ़ते जाएगा, और उसका जो वो एडिशनल जो स्टडी करते जाएगा, और उसका एक्सपीरियंस बढ़ते जाएगा, तो उसका जो प्रमोशन और कैटेगरी बढ़ते जाएगा, और उसका जो कैटेगरी चेंज होते जाएगा, मीन्स जो प्रमोशन बढ़ते जाएगा. सीनियर अकाउंटेंट डिपार्टमेंट हेड होते हैं, देन ग्रुप हेड और इन्वेंट्री अकाउंटेंट होता है, चीफ अकाउंटेंट होता है, और मेनली सब मेंस डिसीजन और ये सब लेने के लिए असिस्टेंट मैनेजर होता है, सीनियर मैनेजर होता है, असिस्टेंट जनरल मैनेजर होता है, और जनरल मैनेजर होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है अकाउंट्स में, CFO, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, लाइक high level tak. This is out of my experience, I am just telling that, because just started with a very low article clerk, and then reached up to a CEO, and then a director of another firm. We have a very big opportunity, and those who utilize that, they can very well achieve their goal and ambitions. Now, accounting rules and generally accepted accounting principle.
Once you understood what are the segments, I mean, so that 4 parts of accounts and many and the scope of accounts and what are the account types of accountants, you can just very well learn the rules of accounting, and the accountant should learn the rules of accounting. Even a small bookkeeper also means whichever whatever documents they are getting, they could they can means just they will understand what type of document is where should enter, which group it should go, all these things. So the rules also should be understood. The accounting rules were explained in the previous video. Last video में मैंने accounting rules के बारे में बताया था. Once again I will give you the for recollection of. Now see, accounting rules. The accounting double entry, we maintain that accounting system in two we follow the system of double entry system of accounting. Double entry system is a recording of transaction with a dual aspect. This last time also explained again, because when I am giving in explain it again because it will be easy to understand, and it's a revision. So every transaction there will be two effects. That is very important, you should understand. And debit, every debit entry will have a corresponding credit entry. For example, मैंने बताया था goods sold to Ram worth 50,000 on credit. उधारी में कुछ 50,000 का माल दिया था, उसको राम का अकाउंट को डेबिट किया और सेल्स अकाउंट को क्रेडिट किया. This is a double entry system. Now the accounting rules. The accounting rules are generally accepted accounting principles, and we categorize the accounts into 3 parts, that is personal account, real account and nominal account. And this personal accounts deal with individuals or any other organizations dealing with or any other corporate or any other individual or entity. It is treated as a personal account. For example, now in the earlier case, Ram's account or any State Bank of India or any other thing, for example any other individual related to individual thing, that is called a personal account. And real account are assets and properties. जो भी assets and properties का जो account में जो category आ जाएगा वो real account किया जाता है, रियल अकाउंट है. और नॉमिनल अकाउंट बोलेगा तो इनकम और एक्सपेंसेस का जो होता है, मतलब इनकम और एक्सपेंडिचर का जो भी होता है वो नॉमिनल अकाउंट में आ जाता है. नाउ द रूल इज़ दैट पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर. रिसीवर को डेबिट करो और गिवर को क्रेडिट करो. That is the thing. Debit. This rule one should understand very well, and you should be very well perfect and very well understood this. Learn this. This is the main principle. Personal account में debit the receiver and credit the giver. Real account में debit what comes in and credit what goes out. मतलब जो भी आएगा उसको debit करो, जो भी जाएगा उसको credit करो. For example, अभी सेल किया समझो, तो राम को मटेरियल दिया, तो अभी क्या है, राम से पैसा आने का है, तो उसको क्या है वो, फॉर एग्जांपल उसने कैश दिया तो कैश डेबिट किया. इधर राम्स का अकाउंट क्यों डेबिट किया, बिकॉज उसको उससे पैसा लेने का है. तो जो मटेरियल गया है और क्या गया है, गुड्स गया है तो उसको क्रेडिट करो. ठीक है, दैट इज़ द थिंग. और व्हाट शुड कम, मनी. Okay, that is the thing. So debit what comes in. For example, अभी राम को कैश से सेल किया है तो कैश आएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट एंड क्रेडिट सेल्स अकाउंट. उसका भी डिटेल में बाद में बताएगा, और हम लोग जो रजिस्टर और लेजर में जो करेगा तभी आपको आराम से समझ में आएगा. Now nominal account. Nominal account deals with all income and expenses. Debit all expenses and losses and credit all incomes and gains. Now I hope you understood this accounting principle. Accounting rules. While preparing financial statements, accountants use generally accepted accounting principle. This was also discussed in part 1 video.
GAPP is a set of standards and principles designed to improve the comparability and consistency of financial reporting across industries. मतलब एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होना चाहिए, एक कॉमन जो स्ट्रक्चर और प्रिंसिपल होना चाहिए. इट कैन नॉट बी जैसा मीन्स अगर समझो लैक्स एंड लैक्स ऑफ जो ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस यूनिट्स रहते हैं, सबका अलग अलग रहेगा, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू अंडरस्टैंड. सो एक कॉमन स्टैंडर्ड चाहिए, कॉमन स्ट्रक्चर चाहिए और प्रिंसिपल्स ये सब एक सेम होना चाहिए, सो दैट कितना भी टाइप का बिजनेस रहने दो, सब एक पर्टिकुलर इसमें एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर में लाता है और उसका प्रिंसिपल्स और रूल्स सब सेम हो जाता है. सो दैट मीन्स वन कैन अंडरस्टैंड. It means mainly for the purpose of owners and investors and tax authorities and government agencies, etc. It should be a common structure. Its standards are based on double entry accounting. अभी ने आपको बताया था डबल एंट्री सिस्टम का अकाउंटिंग जो प्रैक्टिकली जो बताया था. A method in which every accounting transactions is entered as both a debit and credit in two separate general ledger accounts that will roll up into balance sheet and income statement. मतलब वो फॉर एग्जांपल अभी सेल का पता था, सेल्स को तो सेल अकाउंट को क्रेडिट किया, इसका लेजर सेल्स अकाउंट का एक जनरल लेजर में एक अलग सेल्स अकाउंट है. और अभी जो फॉर एग्जांपल कैश रहेगा तो कैश का अकाउंट अलग से रहता, मेंटेन करते हैं कैश अकाउंट. सेम वे या नहीं तो मीन्स जो डेटर्स रहेगा जिससे पैसा लेने का है, मीन्स रिसीवेबल जो डेटर्स का है, तो उसका इंडिविजुअल जो डेटर्स का फॉर एग्जांपल राम होगा, गोपाल होगा, कोई भी होगा, उसका अकाउंट या कोई भी एंटिटी रॉयल ट्रेडर्स होगा, उसका अकाउंट सेपरेट रखता है. तो दो जनरल लेजर मेंटेन होता है, जनरल लेजर इन वन बुक. In most other countries, a set of standards governed by the International Accounting Standards Boards named International Financial Reporting Standards IFRS is used. एक जनरल मीन्स इंटरनेशनल अकाउंटिंग मीन्स अभी तो मार्केट बोले तो ग्लोबल मार्केट है, यू कैन ट्रेड एनीवेयर अक्रॉस द वर्ल्ड. कोई भी दुनिया में किधर भी ये कर सकते हैं, वहाँ से इधर इंपोर्ट करते हैं, यहाँ से वहाँ एक्सपोर्ट करते हैं, ऐसा ट्रेडिंग होते रहता है. सो उसके लिए एक कॉमन जो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉर द ग्लोबल ये उसके लिए एक सिस्टम बनाया है, दैट इज़ इंटरनेशनल फाइनेंशियल. बिकॉज करेंसी अलग रहेगा, उधर का रूल अलग रहेगा, जो स्टैट्यूटरी रूल्स मीन्स टैक्सेशन और ये सब जनरल गवर्नमेंट रूल्स कुछ अलग होगा. तो ये सब जो स्टैंडर्ड को जो मेंटेन करते हुए एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स बनाया हुआ है. तो वी हैव टू फॉलो इफ वी आर डूइंग दैट टाइप ऑफ थिंग्स, एंड इट इज बेस्ड ऑन डबल एंट्री ओनली. Okay, but means there are some rules framed and structures framed for that. Now accounting cycle. ये जो अकाउंटिंग साइकिल सीखेगा तो उसमें क्या होता है, जो हम अकाउंट्स करके कहाँ से स्टार्ट करके कहाँ एंड करते हैं, वो एक प्रोसीजर वाइज बताएगा, स्टेप वाइज बताएगा. Financial accountants typically operate in a cyclical environment with the same steps happening in order and repeating every reporting period. तो फॉर एग्जांपल जो अभी अकाउंटिंग ईयर है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, तो अकाउंटिंग जो एक कॉमन प्रोसीजर ही है. मतलब 1 अप्रैल से जो स्टार्ट किया, ओपनिंग बैलेंस कैरी फॉरवर्ड किया, देन ट्रांजैक्शन एंट्री किया एवरी टाइम, एंड देन वो 12 महीना होने के बाद में उसको जो क्लोज किया, देन अगेन इट्स अ काउंटिंग प्रोसेस. वो सिस्टम सेम है तो और रिपीट करते रहते हैं. तो उसके लिए जो पर्टिकुलर अभी तो जो फ्रेशर्स जो अकाउंट्स में लेते हैं उसको ट्रेनिंग देते हैं और उसका एंट्रीज ये करते हैं और सीख के जो ये आते हैं, तो उसका जो सिस्टम है और उसको पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में फॉर एग्जांपल कोई वाउचर क्लर्क होगा, कोई एंट्रीज क्लर्क होगा, डाटा एंट्री क्लर्क्स, ऑपरेटर्स, और देन कोई सॉर्टिंग, कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, वेरियस डिपार्टमेंट है. कोई कुछ ऑर्गेनाइजेशन में परचेस डिपार्टमेंट इतना बड़ा होगा, उधर ही होगा 4-5 अकाउंटेंट्स, उसका जो इनवॉइसेस ऐड करना, उसका डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड डॉक्यूमेंट तैयार कर ये करना,
परचेज ऑर्डर बनाना और उसका जो मटेरियल आने के बाद में सब क्रॉस चेक करना, उसके लिए सब अलग अलग से ये होता है। सेम वे सेल्स डिपार्टमेंट बड़ा होगा तो उसको उतना हिसाब से वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स जो एक सिस्टम होता है वो सिस्टम फॉलो करता है। So now these steps are often referred to as the accounting cycle। उस इसको अकाउंटिंग साइकिल बोलते हैं। और कहाँ से क्या करने का है वो सिस्टम मैंने आपको बताएगा नीचे। The process of taking raw transaction information, entering it into an accounting system and running relevant and other accurate financial reports। मतलब ये raw documents like एक परचेज इनवॉइस आया है, नहीं सेल्स इनवॉइस आ गया, उसका जो raw information अकाउंटिंग सिस्टम में कैसा एंट्री करने का, कैसा रिकॉर्ड करने का, और उसको रनिंग एंड रिलेवेंट उसको फिर लास्ट वो जाता है फाइनेंशियल रिपोर्ट तक जाता है। तो दैट सिस्टम कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ एंड होता है, एंड व्हाट पर्पस के लिए जो बनाता है। द स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग साइकिल आर 1 फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट होता है कलेक्ट ट्रांजैक्शन इन्फॉर्मेशन सच एज इनवॉइसेस, बैंक स्टेटमेंट्स, रिसीट्स, पेमेंट रिक्वेस्ट, वाउचर्स, uncashed checks or other mediums that may contain business transaction and record in journal or subsidiary registers। अब समझ में आएगा ये जो डॉक्यूमेंट्स लेके उसको सब्सिडियरी रजिस्टर में या जर्नल में एंट्री करने का। Then post journal entries from those registers to the general ledger for the items in step 1। जो step 1 में बताया उसको जो सब्सिडियरी रजिस्टर से जनरल लेजर में पोस्टिंग करने का। दैट कुड बी रिकनसाइलिंग टू एक्सटेंड डॉक्यूमेंट्स व्हेन एवर नेसेसरी। वो कभी भी फॉर एग्जांपल मैंने लास्ट टाइम जो बताया था वो फोलियो अभी सेल्स रजिस्टर का फोलियो है और हाउ हम जनरल लेजर में मेंटेन करते हैं, और जनरल लेजर का फोलियो हम लोगों ने करस्पॉन्डिंगली इधर सेल्स रजिस्टर में, दैट मीन्स करस्पॉन्डिंग मैच हो जाता है। ये पेज का ये इसमें है, ये जनरल लेजर में, और जनरल लेजर देखते टाइम में ये कहाँ से आया तो वो अपना सब्सिडी रजिस्टर में यहाँ से एंट्री हो गया, ये डेट में ये एंट्री में आ गया, फटाफट क्रॉस चेकिंग कर सकते हैं इसके लिए। नाउ थर्ड प्रिपेयर an unadjusted trial balance to ensure all debits and credit balances and material general ledger accounts look correct। और उसके बाद में एक अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस मीन्स मतलब ये सब अकाउंट्स होने के बाद में अकाउंट्स का टोटल करते हैं और बैलेंस को जो कैरी फॉरवर्ड करते हैं, और वो जो बैलेंसेस को हम लोग एक ट्रायल बैलेंस में बनाएगा। और ट्रायल बैलेंस भी आपको मैं बताएगा, ठीक है। वो सब एवरीथिंग मीन्स जो भी एंट्रीज रहेगा और ट्रायल बैलेंस कैसा होता है, और ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, कैपिटल अकाउंट क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, बैलेंस शीट होता है, ये सब बताएगा। तो पहला अभी ये जो देख लीजिए। और उसके एक अनएडजस्टेड मतलब एडजस्टमेंट के पहले जो एडजस्टमेंट रिलीज करने से पहले एक ट्रायल बैलेंस बनाता है। दिस इज एन अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। वो क्यों बनाता है, मतलब जो भी अभी तक जो किया है वो करेक्ट है क्या, मतलब मैथमेटिकली मीन्स करेक्ट है क्या देखने के लिए, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी हो जाता है उसमें, मतलब जो रिकॉर्डिंग किया है वो प्रॉपर हो गया, मिस्टेक तो नहीं है, मतलब एक डेबिट का एक क्रेडिट एंट्री, डेबिट एंट्री का क्रेडिट एंट्री आ गया करके एश्योर करने के लिए। Now pass and post adjusting journal entries at the end of the period to reflect any changes to be made to the trial balance run in step 3। अब ये जो उसके बाद में जो वो फर्स्ट ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद में अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस निकालने के बाद बनाने के बाद में एडजस्टिंग जर्नल एंट्रीज पास करते हैं। बहुत सारे जर्नल एंट्रीज, फॉर एग्जांपल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होगा, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस होगा, और प्रीपेड एक्सपेंसेस होगा, मेनी थिंग्स, और बहुत सारा जो अपना डिप्रिसिएशन, बहुत सारा थिंग्स आ जाता है। तो उसका जो एडजस्टिंग एंट्रीज जो होता है वो जर्नल एंट्रीज पास करके उसको क्या करने का एक फाइनल ट्रायल बैलेंस जो बनाता है आफ्टर एडजस्टमेंट्स। Then prepare the adjusted trial balance to ensure that financial balances are materially correct and reasonable। उसके बाद में जो ट्रायल बैलेंस बनाएगा वो फाइनेंशियल वो जो उसका जो बैलेंस जो इधर उधर जो डिफरेंस नहीं है वो देखने के लिए, मतलब अरिथमेटिकली इट इज़ करेक्ट वो देखने का। प्रिंसिपल क्या होता है वो तो
प्रिंसिपल सीखने ये होना चाहिए, प्रिंसिपल गलत नहीं होना चाहिए। ये जो ट्रायल बैलेंस बनता है वो अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ये करने के लिए। अरिथमेटिकल एक्यूरेसी मीन ठीक है, मतलब करेक्ट है, उसका मतलब ये नहीं कि अकाउंटिंग रूल्स भी करेक्ट है। अकाउंटिंग रूल्स अलग होता है। फॉर एग्जांपल एक एंट्रीज का इफेक्ट उल्टा करेगा तो भी, अभी फॉर एग्जांपल एक अभी एक कैश आया, उसके जगह पे कैश का दिया एंट्री करेगा, तो उसका इफ़ेक्ट क्या होता है, वो डबल इफ़ेक्ट हो जाता है। तो डबल इफ़ेक्ट होएगा तो प्रिंसिपली गलत हो गया। अभी राम को देने के जगह पे श्याम को दिया तो भी इफ़ेक्ट ट्रायल बैलेंस में या नहीं तो अकाउंट्स में इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन प्रिंसिपलिटी गलत हो गया। दैट इज़ अ थिंग। Now summarize all transactions for a given reporting period and prepare the results in the form of financial statements. अभी ये ट्रांजैक्शन को समराइज करके रिपोर्टिंग जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाइए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होता है, अभी इनकम स्टेटमेंट हो गया, मीन्स ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या इनकम एक्सपेंसेस अकाउंट या ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देन बैलेंस शीट. These are the financial statements, cash flow. Now types of accounting. Accounting is done for various purposes or tasks. Accountants may be tasked with recording specific transaction or working with specific sets of information. जो अकाउंटेंट्स को अलग अलग टास्क किया जाता है, मैंने ऑलरेडी प्रीवियस स्लाइड में बताया था। अलग अलग कैटेगरीज होते हैं अकाउंटेंट्स, और उसका जो पर्पस भी अलग अलग हो जाता है उस पर्पस के लिए। फॉर दिस रीज़न देयर आर सेवरल broad groups that accountants can be grouped into: financial accounting, managerial accounting, cost accounting, tax accounting, and last information technology accounting, controller. Many categories are there in that. फाइनेंशियल अकाउंटिंग ये थोड़ा डिटेल में ये जो समझा रहा हूँ, refers to the process used to generate interim and annual financial statements. Then the results of all financial transactions that occur during an accounting period are summarized in the balance sheet, income statement and cash flow statement. ये जो उसका रिजल्ट जो होता है, जो मेनली जो हम लोग ने जो फर्स्ट वीडियो में बताया था, ये जो सब अकाउंटिंग क्यों करते हैं, उसका एक पर्पस होता है, मतलब बिजनेस में क्या हुआ है, उसका रिजल्ट क्या है वो देखने के लिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी व्यक्तिगत मीन्स जो अकाउंट क्या है, फॉर एग्जांपल देना कितना है, लेना कितना है, और एसेट कितना है, लायबिलिटी क्या है, वो सब समझने के लिए दैट इज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. The financial statements of most companies are audited annually by an external auditor. अभी दो टाइप का ऑडिट बताया था, इंटरनल एंड एक्सटर्नल. तो इंटरनल ऑडिटर होता है, एक्सटर्नल ऑडिटर होता है. इंटरनल ऑडिट एंड एक्सटर्नल ऑडिट ये दो टाइप का होता है. तो इंटरनल ऑडिट इंटरनल जो सीनियर अकाउंटेंट्स एंड हाईली एक्सपर्ट्स करता है. It can be a chartered accountant also, and can be any other senior accountant also, to assure that things are going in a correct way. And many of the other firms and statutory audits means should be conducted. Statutory audit जो tax authorities के लिए और banking purpose के लिए होता है, ये certified chartered accountant firms ही कर सकता है. For some such publicly traded companies, audits are a legal requirement. Now, however, lenders also typically require the results of an external audit annually as part of their debt agreement. सिर्फ टैक्स अथॉरिटीज़ को नहीं, अभी मैंने पहले भी बताया था, ये इन्वेस्टर्स या बैंक्स जो फाइनेंस करते हैं, अभी उनके पास खुद को पास पैसा नहीं है, उसको बाहर से पैसा लेना रहेगा, तो उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट करना पड़ता है, प्रोजेक्ट सबमिट करना पड़ता है, अपना बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सब जो देना पड़ता है. तो दैट बैलेंस शीट कैसे भी बना के देगा तो नहीं चलेगा. दैट शुड बी सर्टिफाइड बाय ए प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट. तो ही वो एक्सेप्ट करते हैं, उसके बेसिस पे वो सब होता है. So it should be compulsory to get audited for those requirements. Therefore, most companies have annual audits for one or other reason. कुछ ना कुछ कारण के लिए तो एक ऑडिट होता है. वे छोटा छोटा बिजनेस में ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा बड़ा, अभी छोटा बिजनेस को भी अगर समझो कुछ बैंक से कुछ लोन लेना है या कोई इन्वेस्टर से कुछ पैसा लाना है, then that their account should be get audited and certified.
ना मैनेजर अकाउंटिंग ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है. मैनेजर अकाउंटिंग जो होता है वो मैनेजरल डिसीजन मेकिंग और ये सब पर्पस के लिए बनाते हैं. मैनेजर अकाउंटिंग यूजेस ये जो बार बार जो रिपीट होता है टर्म्स, so because you will get a very good idea and it should be reflecting in your mind, these are the things करके. So manager accounting uses much of the same data as financial accounting. उसमें से एक data extract करता है, but it should be means formulated and put in a separate set of separate structure and a set of rules. But it organizes and utilizes information in different ways. Namely, in managerial accounting, an accountant generates monthly or quarterly reports that a business management team can use to make decisions about how the business operates. समझ में आया होगा. Now, managerial accounting also encompasses many other aspects of accounting, including budgeting, forecasting, and various financial analysis tools. Essentially, any information that may be useful to management falls underneath this umbrella. इसके ये जो नीचे आ जाता है सबका, जो फॉर एग्जांपल बताया था बजटिंग, फोरकास्टिंग, वेरियस फाइनेंशियल टूल्स, कैसा करने का, कैसा ऑपरेट करने का, वेयर वी आर लैकिंग, हाउ टू इम्प्रूव इट, ऑल सब डिसीजंस वो मैनेजर अकाउंटिंग में होता है. नाउ कॉस्ट अकाउंटिंग भी बताया था, मीन्स कॉस्ट कैसा फिक्स करने का है करके. जस्ट मैनेजर अकाउंटिंग हेल्प्स बिजनेसेस मेक डिसीजन अबाउट मैनेजमेंट, कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प्स बिजनेस मेक डिसीजन अबाउट कॉस्टिंग. एसेंशियली कॉस्ट अकाउंटिंग कंसिडर्स ऑल ऑफ द कॉस्ट रिलेटेड टू प्रोड्यूसिंग ए प्रोडक्ट. एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के बाद में उसका कॉस्ट कितना होता है और उसके बाद में हम लोग क्या सेलिंग प्राइस में मार्केट में बेचना है, ये सब डिसीजन होता है. Analysts, managers, business owners, and accountants use this information to determine what their product should cost. In cost accounting, money is cast as an economic factor in production, whereas financial accounting, money is considered to be a measure of a company's economic performance. Already explained किया हुआ था. Now tax accounting, this also already explained. While financial accountants often use one set of rules to report the financial position of a company, tax accountants often use a different set of rules. These rules are set at that federal, state or local level based on what return is being filed. जो municipal authorities रहेगा, government bodies रहेगा और federal requirement रहेगा, income tax और many other things. Now this उसके लिए जो particular जो मेथड में जीएसटी रहेगा, वो सब के लिए अलग से कुछ एक जो पर्टिकुलर फॉर्मेट में बनाना चाहिए, वो इन लोग मेंटेन करते हैं टैक्स अकाउंटिंग में. Now, tax accountants balance compliance with reporting rules while also attempting to minimize a company's tax liability through thoughtful strategic decision making. ये जो कैसा अपना टैक्स लाइबिलिटी कैसा मिनिमम रखने का है, वो उसके बारे में वो स्टडी करते हैं, जो रिकॉर्ड्स मेंटेन करके ये जो उसमें से जो स्टडी करते हैं. और देन देयर वर्क इज़ दैट एंड टाइम पे फाइल करना, इंटरेस्ट नहीं लगाने का, पेनल्टी नहीं आने का, वो ये सब चीज़ उन लोग देखते हैं. Now, a tax accountant often oversees the entire tax process of a company, the strategic creation of the organization chart, the operation, the compliance, the reporting, and the remittance of tax liability. ये सब उनका अंडर में आ जाता है. जो अभी इतना जो हुआ है, अब वो थोड़ा एक्सटेंसिव हो रहा है, तो उसके लिए ये जो वीडियो को मैं 2 पार्ट में कर रहा हूँ. पार्ट 2 को 2 पार्ट में, पार्ट 2A एंड पार्ट 2B. पार्ट 2A अभी तक इधर तक रखिएगा और नेक्स्ट इसका कंटिन्यूएशन में पार्ट 2B भी करता हूँ. वो पार्ट 2B में मैं आप लोग को अकाउंटिंग रूल्स और एस्पेक्ट्स और registers, how to maintain registers and how to enter in ledger, that is posting, इसके बारे में बताएंगे. So और थोड़ा डिटेल में जाएगा. That also will take some more time. That is the reason I am just breaking this particular video session 2 into 2 parts, 2A and 2B part. So next we will continue in part 2B.